हेलो एवरीबॉडी। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम जॉइंट ओरिएंटेशन इन एटैब्स के बारे में। बेसिकली मेरे पास दो प्लान्स है। फर्स्ट वन इज लाइक नॉन ऑर्थोगोनल प्लान जिसमें कि मेरे सारे फ्रेम एलिमेंट स्क्यूड है यानी कि कुछ इंक्लिनेशन पे है, एंड द सेकंड वन इज ऑर्थोगोनल प्लान जिसमें कि मेरे सारे फ्रेम एलिमेंट्स ऑर्थोगोनल है। लेकिन एक सेकेंड, जब हम इसके जॉइंट ओरिएंटेशन को देखते हैं तो ये भी ओरिएंटेशन उसके ऑर्थोगोनल ही दिख रहे हैं मुझे, और इसके जब मैं जॉइंट ओरिएंटेशन को देखता हूँ तो ये भी लगभग ऑर्थोगोनल है। तो इसमें हमको दो सवाल देखने के लिए मिलते हैं। पहला कि क्या एटैब्स हमको ग्लोबल एक्स ग्लोबल वाई में रिएक्शन देता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम जॉइंट ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं एटैब्स में। तो जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, बने रहना। So let's get started. First one is kind of orthogonal frame building जिसमें कि मेरे सारे frame element kind of orthogonal है, and the second one is kind of non orthogonal frame building जिसमें कि मेरे सारे element non orthogonal है। So जब हम एटैब्स में joint orientation देखते हैं बेस पे, वो तो लगभग सेम दे रहा है। Ideally it should be something like this because मेरा frame elements कुछ angle पे inclined है। So what we are interested in this key to know that whether the etab is giving the reaction along fx fy or it is giving the reactions along fx dash or fy dash for the non-orthogonal building. For orthogonal building it will give the reaction along the x and y. That is not a problem. ठीक है, और हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि whether etab is giving along the fx dash and fy dash or fx or fy along for the non-orthogonal building. For this study हम एक स्टडी मॉडल बनाएंगे। फर्स्ट वन इज केस वन विद द कॉलम ओरिएंटेशन इज काइंड ऑफ ऑर्थोगोनल और विद सम लोड p, एंड सेकंड केस टू जो कि कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है से 22 डिग्री, एंड हियर द लोड p इज अप्लाइड ओवर द member local axis and here the load p is applied along the orthogonal direction of the member. For this study हमने दो फ्रेम्स मॉडल किए हैं एटैब्स में। फर्स्ट वन इज काइंड ऑफ परफेक्टली ऑर्थोगोनल फ्रेम एंड द सेकंड वन इज काइंड ऑफ skewed frame. This inclination is nothing but for our study I have considered 22 डिग्री। मैंने इसको 22 डिग्री कंसिडर किया है। तो और हमने इस पे टॉप पे लोड क्या लगाए हैं, 50 किप्स का मैंने टॉप पे लोड लगाया है। अब जैसे देख सकते हैं फ्रेम लोड्स एंड अंडर लाइफ दैट इज दिस इज 50 किप का आप लोड देख सकते हैं, एंड दिस लोड इज अप्लाइड अलॉन्ग द ऑर्थोगोनल एक्स डायरेक्शन that is global x, and this load of 50 kips is applied along the member local axis that is along the member direction. So हम देखेंगे कि reactions बेसिकली हम reactions देखेंगे। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फ्रेम का ओरिएंटेशन 22 डिग्री है। हम बेसिकली रिएक्शंस देखेंगे fx एंड fy। अब जैसे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 50 किप्स का लोड लगाया था, हमको यहाँ पे 50 किप का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला है दैट इज इन ग्लोबल fx डायरेक्शन। सो इट विल बी बेटर इफ आई सी इन द बॉटम मोस्ट लेवल। 50 किप्स का मुझे रिएक्शन देखने के लिए मिला है, एंड सिंस मैंने लोड अलॉन्ग द मेंबर लोकल एक्सिस दैट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन अप्लाई किया था, एज वी कैन सी इन द केस 2 मॉडल विच इज स्क्यूड बाय 22 डिग्री, हम देख सकते हैं कि फोर्सेस इज गेटिंग रिजॉल्व्ड। दैट मीन्स दैट दिस 50 किप्स फोर्स इज गेटिंग रिजॉल्व इन 46 किप्स हॉरिजॉन्टल एंड 18.73 किप्स वर्टिकल। This is nothing, this is just a simple resolution of the forces. If I have, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का फ्रेम है, तो हमने क्या अज्यूम किया था कि हमने यहाँ पे लोड लगाया था along the member axis 50 किप्स या किलोन्यूटन का हमने कुछ लोड लगाया था। तो this force is getting resolved along the x orthogonal x and y direction. This 50 kilonewton kips is getting resolved into 50, and this angle, what was the angle? ये हमारा एंगल था 22 डिग्री। This is getting resolved into 50 cos 22 degree, and this is getting resolved into 50 sin
22 degree. When you solve this, you will be getting this around this will be around 18, this will be around 48, I guess. This will be around 46.35. Let's quickly check that. I will just add that. Let's open a calculator over here. Calculator. So 22 trigonometry, and I will just put cos 22 degree is 0.092 into 50. That is 46.35. This will be getting 46.35. Similarly, we are getting this value as 46.35 kips, and this value will be getting around 18.36 kips. When we see the resultant, since angle theta for the resultant is 90 degree, so r is equals to under root of, we have the formula for resultant, fx square plus fy square plus 2fx fy cos theta. Since theta is equals to 90 degree, since the angle is 90 degree between these orthogonal directions, so we can just ignore that, and we will get, when we add these resultant forces, that is around 46.35 square plus 18.36 square, we will be getting 50, nearly, that is nearly equals to 50 kips. Let's quickly verify that. Since we have applied the force of 50 kips in this direction, and we are getting the resistance in opposite direction of 50 kips, that is fine. This force is being verified. Now अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने 50 किप्स का फोर्स यहाँ पे लगाया था कुछ इस डायरेक्शन में, that is along the member local axis, that is in this direction, 50 kips. So the forces is getting resolved to, basically the forces is getting resolved to, that is in fx direction, and this is nothing but fy direction. This force of 50 kips is getting resolved into two directions, that is fx, and this is nothing but fx, and this is nothing but a fy. This fx is nothing but 50 cos whatever this angle is, this angle say 22 degree. Since हमारा एंगल 22 डिग्री था, 50 cos 22 डिग्री, एंड ये कितना होगा 50 sin 22 डिग्री. So when you solve this, you will be getting around 46.36 kips, and this will be, you will be getting around 18.73 kips. When you find the resultant, resultant is nothing but under root of, as per the parallelogram theorem, we have the under root of fx square plus fy square. Since this term f cos theta, since theta is 90 degree between these two forces, so I will be just discarding this value, and this I am just considering this. When we just do the sum, under root of fx square plus fy square, जब हम इसको करेंगे 46.36 square plus and 18.73 square, तो हमको मिलेगा nearly around 50 kips. That means Etabs is resolving the forces internally. So हमको joint orientation करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन SAP में हमको joint orientation का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है. We can directly orient the joint according to the local axis. मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का फ्रेम है, तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उस जॉइंट, जैसे हम Etabs में इस तरह का जॉइंट ओरिएंटेशन आ रहा है, आप इसकी लोकल एक्सिस आप चेंज कर सकते हो और उसको कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो. यू कैन अलाइन दिस okay in this SAP. But in Etabs, since it is doing internally, since the forces are getting resolved, that is along the fx dash and fy dash, as we have seen before, that is along fx dash and fy dash, then we need not to do the internal, like we need not to do the
assign the joint orientation in Etabs. Okay, thank you.